Hello, my dear students, and welcome to my channel Imavate Academy. कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी. I was COVID positive. I'm still recovering, but I have recovered to some extent already. And today I'm here with the 5th lecture of semester 2 computer applications for the class 10th students. So I was doing the chapter arrays. We have done 4 lectures already on this unit. The topic that I started in the previous lecture was searching. I told that there are two types of searching. One is linear search and another is binary search. In the previous lecture, lecture number 4, I discussed linear search. Today I will discuss binary search. Now it is very important for all of you people to watch the previous lecture, linear search, to understand binary search. Without watching the previous lecture, it won't be much fruitful to watch this particular lecture. All right. So I hope you all have watched the previous lectures and only then you are watching this particular lecture. So let us start with the topic binary search. Binary search. Now, do you remember that in linear search, we studied that each and every element of the array was searched with the search element. But in binary search, this does not happen. Now, let us see how does it work. Before understanding binary search, you have to know a term known as sorted array. Sorted array. What does this mean? An array is known to be sorted if the elements are arranged in increasing order or decreasing order. For example, suppose I have an array. Say the name of the array is ARR and the elements of this array is 8, 7, 5, 1, 3, 9. So if you see, the array is not sorted because the elements are neither arranged in descending order nor arranged in ascending order. They are just randomly scattered. 8 se chota 7, 7 se chota 5, 5 se chota 1. So apparently it is looking that it is arranged in descending order, but the next element 3 is more than 1. So again, increasing mein ho gaya. Fir more than 3 is 9. So you see, it is not arranged in descending order, not even in ascending order. So this is an unsorted array. All right. Now, if I have an array whose elements are arranged in increasing order, say the same elements 1, 3, 5, 7, 8, 9. You see this, the same elements are here in this array also, the second one, which I have written with red color. Now, if you see, this array is arranged in increasing order, ascending order, and we will say that this array is a sorted array. Now, if the elements are arranged in decreasing order, then also we will say that the array is a sorted array. So now, binary search technique can be applied only to a sorted array. It cannot be applied to an unsorted array. This is very, very important condition for applying binary search. So binary search, this is a very, very important, can be applied only to a sorted array. This is very, very important thing. And what do you mean by a sorted array? Now you know what is the meaning of a sorted array. An array in which the elements are arranged either in increasing order or decreasing order is known as a sorted array. Now, sorting is actually a separate topic, sorting of an array, where there are different sorting procedures, bubble sort, selection sort, but that is not in your syllabus. That is removed from your syllabus. So sorting we are not going to discuss. Means how are we going to arrange the elements in increasing order or decreasing order? That topic has been removed. So just the term, what is the meaning of sorting and what is a sorted array, just that is enough. Now,
So the first thing is the binary search technique can be applied only to a sorted array. However, linear search, if you remember in the last program that we did in the previous lecture, we did a program on linear search where we applied linear search technique to an array which was not a sorted array. The elements were randomly arranged. So linear search obviously can be applied to unsorted array or sorted array in both kinds of array, but binary search compulsorily must be applied to a sorted array. Now coming to the mechanism behind binary search, let us take the example of an array. So you can see I have initialized an array whose name is ARR and which has these elements 12, 15, 20, 36, 42, 55, 60, 83, and 92. Now, each of the elements has it's an index number, index value, you know that. So this 12 is actually ARR0. This 15 is ARR1. This 20 is ARR2. Okay, I'm just writing the index numbers of each of these elements. And the 92 has index number of 8. So this is ARR8. Now, also you will see that these elements are arranged in increasing order. So this is a sorted array. All right, so to explain binary search, I have taken an array which is already sorted. You can see this array is a sorted array. Now, if we don't have a sorted array, first we have to do sorting of the array. Means we have to arrange the array in either increasing or decreasing order. But since sorting is removed from the syllabus, so we are not going to discuss how do we sort an array. So I have taken an already sorted array to explain you binary search. The array is already sorted. Now, before I actually deal with the program, let me explain you the concept, or rather the mechanism. How does the compiler, apply the technique of binary search? So what does the first thing happen? What is the first thing that happens, or what is the first thing that the compiler does is it finds what is the middle element of this array. What is the middle element? How does it look for the middle element? So 0, which is the first element ka index number, is this 0. That means ARR0 and ARR8. What is the last element? ARR8. तो ये जो 0 है और ये जो 8 है, इसका average निकाला जाता है. That means 0 plus 8 divided by 2. What is that? 4. That means ARR4 is the middle element. ARR4 is this element, isn't it? 42 is the ARR4. This index number 4 है. And obviously this is the middle element of this array. All right. Now, this element is now compared with the search element. Say my search element, जिसको key भी बोलते हैं. If you remember, search element को key बोला जाता है. That this is that element which I am looking for, which I am searching, whether this element is present in the array or not. So let me say that my search element is 83. Means I am looking for 83 in the array. If 83 is present in the array or not present. Well, 83 is of course present in the array. You can see there is an 83 in the array. Anyway, so we are searching that whether 83 is present or not. So now what will happen? This ARR4 will be compared to this key 83. That whether this ARR4 is equal to 83. So definitely not, because ARR4 is 42. So it is not equal to 83. Then if it is not equal to, then whether it is less than 83 means the middle element is being compared to the search element, and it is being tested that whether ARR4 is less than the search element or greater than the search element. So ARR4 is less than this 83 and this condition is true,
Yes, because ARR4 is 42 and 42 is definitely less than 83. See, this is not very easy. Okay, you have to pay full attention, my dear students, to understand binary search. Binary search is not that easy. You can't have the feeling कि चलो ये तो बहुत easy है, इसको ऊपर ऊपर से सुनते हैं तो समझ में आ जाएगा. नहीं आएगा समझ में. फिर वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा. And I therefore tell you, you have to pay rather a lot of attention to understand binary search. Listen very carefully. Once again, I am trying to do the summary of what I have said so far. सबसे पहले middle element को identify किया गया. कैसे identify किया गया? Index number 0 and the last index number is 8. उसका average निकाल के 0 plus 8 divided by 2 is 4. Now A4 में जो element है, that is the middle element, that is 42. फिर क्या कर रहा है compiler? Middle element को check कर रहा है कि search element से less है कि greater है. So of course less है. 42 is less than 83 is true. अगर less है, it means what? कि हमारा search element 83 can never be present in this region. क्योंकि 83 अगर ज्यादा है और ये sorted array है, तो definitely 83 42 से right side में होगा, somewhere to the right of 42 ही होना चाहिए, क्योंकि ये sorted array है and 83 is more than 42, तो obviously less than 42 के region में हमारा search element हमें मिलने वाला है नहीं. This you understand. This is the most important thing of the binary search. कि अगर 83 हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ही है कि हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो इस लेफ्ट साइड में हो ही नहीं सकता, मिलने खोजने की भी जरूरत नहीं है. अब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन को देखना है? कंपाइलर अब कौन से रीजन पर फोकस करेगा? ओनली दिस रीजन. यू सी दिस रीजन, बिकॉज इस रीजन जो पीछे वाला रीजन है इधर तो हमारा 83 होगा ही नहीं किसी भी हालत में, बिकॉज दैट रीजन इज लेस देन 42 और लेस देन 42 पे तो होगा ही नहीं. 83 इज मोर देन 42, तो मोर देन 42 वाले रीजन को हमें देखना है. तो डिड यू गेट वन थिंग? लीनियर सर्च में क्या हो रहा था बच्चा? लीनियर सर्च में सारे एलिमेंट्स को चेक किया जा रहा था, लेकिन अभी तुमने देखा कि बाइनरी सर्च में so many elements are rejected, कि इसको चेक करेगा ही नहीं, 12 को चेक करेगा ही नहीं, 15 को चेक करेगा ही नहीं, 20 को चेक करेगा ही नहीं, 36 को चेक करेगा ही नहीं. हाँ 40 को चेक किया, एक एलिमेंट को चेक किया अभी तक, but these elements 12, 15, 20, 36, these are less than 42, so they are definitely not going to be these elements are definitely not going to be 83. अब हमारा कंपाइलर किन एलिमेंट्स पे फोकस करेगा? इस 55 से लास्ट वाले तो 92 को. नाउ फिर से सेम थिंग हैपेंस. कहां से? जैसे पहले वाला का 0 + 8 किया गया था, अब कहां से स्टार्ट करेगा? अब ये 5 से. सो 5, दिस इंडेक्स नंबर इज 5 एंड द लास्ट वाला इज 8. सो 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस एवरेज को निकाला जाएगा. सो 13/2 इज 6 पॉइंट समथिंग, तो उसको 6 लेगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, 6.5 होगा, बट 6.5 को इंट में कन्वर्ट कर देगा. आई मीन 12 या 6.5 को 12 इंट में कन्वर्ट करके वो 6 ले लेगा. एंड ये जो 6 मतलब दिस, नाउ लुक, 6 किसका इंडेक्स वैल्यू है? इस 60 का 6 है, तो अभी इसको मिड वैल्यू ट्रीट करेगा. इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस सब एरे की मैं बात कर रहा हूं. सब एरे का मतलब होता है एरे का पार्ट. ये जो सब एरे है इसका मिडिल एलिमेंट है ये 60. अब कंपेयर करेगा ये सेम चीज जो यहाँ पे हुआ था भाई, कि ARR जो हमारा 6 है अभी, क्योंकि 6 आ गया ना, इज लेस देन द सर्च एलिमेंट. क्या ये ARR 6 मीन 60 83 से छोटा है? जी हाँ छोटा है. 60 is less than 83, so still it is true. इसका मतलब ये अभी भी ट्रू है, इक्वल तो नहीं है 83 के, लेकिन लेस देन है. इसका मतलब कि हमें अभी इस 55 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है. 60 के नीचे ये हो ही नहीं सकता, इस 60 के नीचे ये हो ही नहीं सकता लेफ्ट में, इधर चेक करने की जरूरत नहीं है. अब हमारा फोकस इन दोनों एलिमेंट्स पे होगा. अभी 83 और 92 को बस चेक करना है. अब 83 का फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है? 7, तो ये नेक्स्ट किसका एवरेज निकाला जाएगा? ये 7
और ये 8, 7 + 8 / 2, तो दिस विल बी 7.5, तो जिसे 7 ले लिया जाएगा एंड चेक किया जाएगा नेक्स्ट में ARR7 क्या ये इक्वल टू 83 है या फिर लेस देन इक्वल 83 है। देखा जा रहा है कि हाँ ये इक्वल टू 83 है, ऑब्वियसली ये इक्वल टू 83 है। ARR7 इज 83 एंड इट इज इक्वल टू 83, तो कंपाइलर ने इसको ढूंढ लिया, मिल गया इसको सर्च एलिमेंट। ठीक है, तो मिल गया तो बस अच्छी बात है। तो डिड यू सी वन थिंग, बाइनरी सर्च क्यों बोल रहा है इसको, क्योंकि हम इसको हर बार 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले एक पार्ट को रिजेक्ट कर दिया, दूसरे पार्ट को चेक किया, फिर उस पार्ट के मिड पॉइंट, मिड एलिमेंट को चेक करें, फिर उसका एक पार्ट को रिमूव करें, दूसरे पार्ट को चेक करें। यही काम है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द array. You saw that so many elements were not checked at all. But the thing is, it must be a sorted array. Only then you can apply binary search. Otherwise, obviously, binary search तुम apply नहीं कर सकते हो अगर sorted array नहीं हो तो। ठीक है? So this is binary search. Now let us write a small, program on binary search. Now on my screen, I have opened the BlueJ window and I have written a program already which demonstrates binary search. Let me explain the program in detail. Each and every statement of the program will be discussed. Listen. So the very first thing that I do is I imported the util package because I have used scanner class for inputting. What will I input? I'll input the search element from the user. The user will provide me in the program that element which is to be searched. Okay, so the name of the class is binary search, public static void main, and then I have declared an array or initialized an array with these elements 12, 14, 16, 17, 19, 23, 45. You must observe that this array is already a sorted array. The elements are arranged in increasing order. Then I have created the scanner class, scanner object. Then I have initialized a variable flag, which is of Boolean data type with the value false. Okay, so this is from where the, the program actual, the total things, the main thing starts from. So सबसे पहले क्या हुआ कि flag एक variable create हुआ, उसमें कौन सा value है, initial value is false. Okay, now see the try run. Then int first is equal to 0. First नाम का एक variable create हुआ, int data type का है, the value is 0. Last is also a variable created. What is its value? ARR.length -1. ARR.length. If you remember, dot length मैंने बताया है is used to find the length of an array. कौन सा array in this case? ARR. So ARR.length will find the length of the array whose name is ARR. So you see ARR का length कितना है? So length always starts its counting from 1, right? Means number of elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elements are there. So ARR is 7 and ARR -1 hai. That means 7 - 1 is 6. So last is 6. The last में कौन सा value चला गया? 6. Then mid is a variable created. No value is initialized, and key is also a variable which is declared whose value is also not given, not initialized. आगे क्या है प्रोग्राम में? ये सब चीज हो गई, मेमोरी में ये सारी चीजें हो गई। अब आगे क्या है? This message prints on the output screen. Enter the element to be searched. Enter the element to be searched. ये आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा। जब मैं प्रोग्राम को अभी रन करूंगा थोड़ी देर में, you will see that this message comes up in the output window, terminal window. तो इस मैसेज को देखकर यूजर कोई एलिमेंट जिसको वो सर्च करना चाहता है, that element will be entered. Say I am searching for 14, for example. तो मैं 14 enter करूंगा. Now in the next step, key is equal to sc dot
next int. So due to this code, what will happen, this 14 will go in which variable, key. ये जो key यहाँ create हो गया उसमें ये 14 चला गया. Simple सा चीज है. Now you see a while loop is starting. While loop start हो रहा है. While में क्या है, ये condition true है या false है, पहले देख लो. First is less than equal to last. Less than or equal to last. तो first हमारा क्या है, 0 and last क्या है, 6. तो obviously 0 is less than 6 and hence this condition of the while loop is absolutely true. So if while का condition is true, it enters into the while loop. Now when it enters into the while loop, what happens? Mid is equal to first plus last divided by 2. First means 0, last means 6. So 0 plus 6 divided by 2, that is 3. So 3 goes and gets stored in mid. तो अभी हमारा mid का क्या वैल्यू हो गया, 3. Now अब if कंडीशन है, if ARR mid का वैल्यू अभी 3 है, so that means ARR3 is greater than key. तो key हमारा 14 है, ARR3, which is ARR3? So this is ARR0, this is ARR1, this is ARR2, this is ARR3. That means the 17, which is the middle element, of course. So that element is being compared with the key, which is 14. So is 17 greater than key? Yes, 17, this 17, ARR3, which is 17, is greater than key. Key is 14. So 17 is greater than 14. And hence this if condition is true. So it will enter into the if body, and if में क्या है, last is equal to mid minus 1. That means last का value अभी change होके mid minus 1 हो जाएगा. So last is now just, mid was 3, so 3 minus 1, 2. So last value is now 2. That means कि हमें अब समझने की कोशिश करो what has happened. अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा सर्च एलिमेंट 17 से छोटा है, मींस this 17 is larger than the search element 14, then we need not check these elements, right? हमें अब इन सारे एलिमेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सर्च एलिमेंट अब इधर मिलने वाला है. सो हमारा लास्ट एलिमेंट अब हमारा ये 16 तक ही हमें चेक करनी है. तो 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 मींस इंडेक्स वैल्यू जिसकी 0 है, 0 दैट इज 12 से स्टार्ट करेंगे, एंड इस 2 वाले इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट तक हम चेक करेंगे. सो लास्ट में चेंज क्या हो गया, लास्ट अभी 2 हो गया. 2 मतलब जिसका इंडेक्स नंबर 2 है, 16, इसको पॉइंट करेगा लास्ट, क्योंकि हमें इस 12 से 16 के बीच अब चेक करनी है. अब इस रीजन में चेक करने का कोई जरूरत नहीं है. 17, 19, 23, 45, तो इनको अब चेक करने की जरूरत नहीं. सो दैट्स द थिंग व्हिच इज डन राइट नाउ. अच्छा, आगे else if है. else if में ये कंडीशन फॉल्स हो गया, बिकॉज ARR mid means ARR3 is not less than key. 17 is not less than 14. So this is false, and hence else if is not checked, and else part will also not be evaluated, because if अगर evaluate हो गया, else evaluate होगा नहीं. So this thing is not evaluated at all. अच्छा, तो हमारा else if और else evaluate हुआ नहीं. ये सारे steps कुछ भी इस बार evaluate नहीं हुआ फर्स्ट इटरेशन में. अब आगे क्या है प्रोग्राम में आगे है इफ. ये व्हाइल ब्लॉक यहाँ एंड हुआ, और एंड होने के बाद ये फिर लूप है, तो ये ऊपर फिर चला गया, एंड इट विल अगेन चेक द कंडीशन. First is less than equal to last. 0 is less than 2. Yes, it is still true. So again, there will be an entry made into the while loop. And फिर से क्या हो गया, mid is equal to first plus last divided by 2. तो mid का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, first plus last means 0 plus 2 divided by 2. That is 0 plus 2 is 2 and divided by 2 means 2 by 2 is 1. So mid value is 1 this time. तो हमारा mid का वैल्यू 1 हो गया. If ARR mid is greater than key, अब देखो ARR mid का वैल्यू अभी 1 है, that means ARR1 mid का वैल्यू 1 है. So ARR1 कौन सी एलिमेंट की बात कर रहा है, ARR1 is this 14, right? इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है. So is it greater than 14? Key is 14.
So is 14 greater than 14? No, 14 is not greater than 14. Hence, this if block is not evaluated this time. Of course, ARR 1 is not less than 14 also, means 14 is not less than 14 also. This else if is not evaluated. So it now only means that ARR1 means 14 is equal to 14. So else part is the only thing which is left. So that will be evaluated क्योंकि equal है, ना तो less than है, ना तो greater than है. तो अभी हमने क्या लिख दिया, found at index. तो else part के अंदर घुस जाएगा, ये दोनों execute नहीं होगा. Found at index, आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, फाउंड एट इंडेक्स, क्योंकि 14 मिल गया ना इसको. मिड, कौन सा इंडेक्स, मिड. तो मिड का क्या वैल्यू है, 1. फाउंड एट इंडेक्स 1. एंड ऑब्वियसली तुम देखो 14 कहाँ पे है, 14 इंडेक्स वैल्यू जिसकी 1 है वहीं पे है ना 14. सो 14 को सर्च कर रहे थे, 14 मिल गया, इंडेक्स वैल्यू 1 पे मिल गया. फ्लैग इज मेड इक्वल टू ट्रू. तो जैसे ही मिल जाता है ना हमें, उसी समय फ्लैग का वैल्यू पहले फॉल्स था, अभी हमने ट्रू कर दिया. मान लो कि हमें एलिमेंट मिला ही नहीं, तो फ्लैग का वैल्यू फॉल्स ही रहेगा, isn't it? फ्लैग का वैल्यू फॉल्स रह जाएगा. But since we have actually got the element which was to be searched, which was being searched, तो वो मिल गया, तो फ्लैग का वैल्यू अभी ट्रू हो गया. एंड देन व्हाट इज देयर, ब्रेक. ब्रेक मींस ये पूरे लूप से बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम व्हाइल लूप विल नॉट हैपन. ब्रेक, तो इट विल कम आउट ऑफ दिस इफ, आउट ऑफ दिस व्हाइल ब्लॉक. एंड ये अब इफ में आ गया, इफ में आके चेक करें फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, नो, फ्लैग का वैल्यू अभी ट्रू हो गया. सो नॉट फाउंड ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड. अब फिर ये प्रोग्राम एंड हो गया यहाँ पे. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आता है कि नहीं. इसको कंपाइल कर लेते हैं. इट सेज क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स. तो अब इसको हम यहाँ पे इसको रन करेंगे. सो मैं इसको यहाँ void main करता हूँ, और इस बार मैं सर्च एलिमेंट, चलो 14 ही पहले देता हूँ. एंड इट सेज फाउंड एट इंडेक्स 1, क्योंकि हमारे 1 इंडेक्स पे 14 है. जो मैंने अभी अभी ड्राई रन करके समझाया वही आउटपुट हमारा आ गया. अब कोई दूसरा एलिमेंट को मैं देता हूँ, एक बार खोल के देख लेता हूँ प्रोग्राम में. जैसे हमारा 23 है मान लो, लेट मी सर्च फॉर 23. सो 23 इज एट विच इंडेक्स, 5, इंडेक्स 5. तो देखता हूँ आता है कि नहीं. मैं देता हूँ 23 फाउंड एट इंडेक्स 5, तो आ रहा है. एंड नाउ लेट मी गिव एन एलिमेंट which is not present in that array at all. तो जैसे 99 दे देता हूँ, it is not present in my array. So क्या आएगा, not found. Not found, क्यों not found आया, क्योंकि फ्लैग का वैल्यू ट्रू नहीं हुआ, फ्लैग का वैल्यू फॉल्स ही रह गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट फाउंड हुआ ही नहीं, तो फ्लैग का जो वैल्यू ट्रू होना था वो हुआ नहीं. तो ये फ्लैग का वैल्यू जो इनिशियली फॉल्स था वो फॉल्स रह गया. तो लास्ट में लूप के बाहर जब चेक हुआ इफ फ्लैग इज फॉल्स, तो ये ट्रू हो गया. फ्लैग इज फॉल्स मतलब फ्लैग फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फ्लैग फॉल्स ही है. सो दिस इज व्हाई नॉट फाउंड इज बीइंग प्रिंटेड when I entered 99, because 99 was not present in my array at all. So this is what binary search is. एक चीज तुम ध्यान दोगे कि लीनियर सर्च में ईच एंड एवरी एलिमेंट वाज बीइंग सर्च्ड. तो अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड होता है तो उन सभी रिपीटेड एलिमेंट्स के इंडेक्स को बताया जाता है आउटपुट में. जैसे अगर हमारा 14 सर्च हो रहा है एंड 14 इज एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, तो लीनियर सर्च में बोथ ऑफ द 14 का इंडेक्स बताया जाता है. आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द प्रोग्राम. देखो लीनियर सर्च वाले यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, लीनियर सर्च का प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूँ. ये वो प्रोग्राम है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. इफ यू सी 7, लुक एट दिस 7. दिस 7 इज प्रेजेंट एट 3 डिफरेंट इंडाइसेस एट 3 डिफरेंट पोजीशंस. तो जब मैं इसको, और ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज बीइंग ट्रैवर्स्ड. तो जब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, और मैं 7 को सर्च करता हूँ, तो you can see the output is found at index 2, found at index 5, found at index 7, क्योंकि ये तीनों indices में present है.
तो लीनियर सर्च में क्या होता है ना, अगर रिपीटेड एलिमेंट्स है तो ईच एंड एवरी position of the search element is being told in the output. तो ये एक एडवांटेज है लीनियर सर्च का। हालांकि ये स्लो है बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज बीइंग चेक्ड। बाइनरी सर्च फास्टर है क्योंकि उसमें हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को सर्च नहीं करते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट ये है, एक डिमेरिट है कि इसे सॉर्टेड एरे होना चाहिए। दूसरा, अगर रिपीटेड हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो सपोज मैं 14 एक और 14 यहाँ लिख देता हूँ। So I have two 14s, right? At index 1 and at index 5. तो यहाँ पर इसको मैं अगर आउटपुट देता हूँ तो क्या मुझे दोनों 14s का बताएगा इंडेक्स आउटपुट में? देखो क्या होता है। 14 दे दिया, फाउंड एट इंडेक्स 1, ये मुझे नहीं बताया फाउंड एट इंडेक्स 5। हालांकि एक और 14 5 इंडेक्स पर भी था। दिस इज द डिमेरिट ऑफ बाइनरी सर्च कि वो नहीं बताता है। जहां पे उसको फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ना उसका इंडेक्स बताता है। तो इसमें हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है बाइनरी सर्च में। ठीक है, तो लेट अस नाउ राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। राइट डाउन differences between linear search and binary search. Make two columns. First column for linear search and the other column for binary search. ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चंस इसमें बहुत आते हैं। So linear search, it works with both sorted as well as unsorted arrays. लेकिन हमारा जो बाइनरी सर्च है, ये अभी अभी हमने बताया, इतना अच्छे से समझ में भी तुम लोगों को आया, वर्क्स ओनली विथ sorted arrays. The second is linear search में we can have repetition of elements. Repetition of elements is possible if index is required. मतलब अगर हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन हो सकता है एरे में। लेकिन बाइनरी सर्च में अगर हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो फिर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जो हमने 14 सर्च किया वो दो जगह था, लेकिन दोनों का इंडेक्स हमें नहीं बताया गया। तो अगर हमें इंडेक्स चाहिए तो एक ही 14 होना चाहिए, तभी ना हमें करेक्ट डेटा आउटपुट में मिलेगा। सो यहाँ होना चाहिए ऑल एलिमेंट्स शुड बी यूनिक if index is required. If index is required, इसमें क्या होगा ना कि तुम्हें हाफ करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि 14 बताया जा रहा है फाउंड एट इंडेक्स 1, although it was present at index 5 also, but that was not told. So that was a demerit. And the third is linear search में क्या होता है, each and every element is traversed in a sequential manner या फिर in a sequence. ये तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी सा पॉइंट है। एक सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करता है, चेक करता है। इसमें नहीं होता है वैसा। इसमें क्या होता है, सर्च द एरे बाय सीकिंग द मिडिल एलिमेंट। तो सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को सीक किया जाता है, सर्च किया जाता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन इट, it will be checked in the sub arrays before or after it.
it will be checked in the sub arrays before or after it. ठीक है ना? डिपेंड करता है कि अगर हम उधर की राइट साइड को रिजेक्ट कर देंगे, कंप्लीटली सर्च करने की जरूरत नहीं है, या लेफ्ट साइड को कंप्लीटली सर्च करने की जरूरत नहीं है, किस पोर्शन को सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सर्च एलिमेंट्स हमारा मिडिल एलिमेंट से ज्यादा है या कम है. So, and that is what binary search का main idea is. Okay. So I hope you have understood linear search and binary search. That's all for today's lecture. I'll continue in the next lecture. Have a nice day, all of you. Take care of yourselves. God bless you, everyone.